Hello, welcome back to our channel. Today I will show you another DIY projects or home decor videos. Do you want to make over your wall only on minimum cost? Then please keep watching this video. If you like this video, then please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. So let's get started. पहले एक वॉल चूज़ कीजिए जिस पे आपको डिज़ाइन करना है। फिर इसके ऊपर आपको पसंदीदा कोई भी कलर आप लगा लीजिए। हमारे इस वॉल पे पहले से ही कलर किया हुआ है। इसके ऊपर ही हम स्टेंसिल करेंगे। स्टेंसिल एक बहुत ही इजी तरीका है वॉल पे डिज़ाइन करने के लिए। स्टेंसिल आपको कोई भी पेंट शॉप में बहुत सारे डिज़ाइन में मिल जाएंगे, जिसकी प्राइस है अराउंड 150 रुपीज़। लेकिन हम घर पे भी सिर्फ 5 से 10 रुपए में इसको बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हमने एक पेपर पे डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be. फिर इसको काटने के लिए एक ग्लास पेपर उसके ऊपर रखकर एक नाइफ से बहुत धीरे धीरे उसको काट लेना है। Meant to be in the great outdoors, forever free. कलर बनाने के लिए हमने ग्रीन स्टेनर्स यूज़ किए हैं। ये आपको 7 या 8 कलर पे मिल जाएगी। ये 50 ml की बोतल है, इसकी प्राइस है ओनली 30 रुपीज़। आप कोई भी वाइट कलर के साथ मिक्स करके आपको पसंदीदा कोई भी कलर बना सकते हैं। हम यहाँ पे एशियन पेंट्स रॉयल वाइट के कलर यूज़ किए हैं। हम यहाँ पे ग्रीन कलर के 2 शेड यूज़ किए हैं। पहला कलर लाइट ग्रीन है और दूसरा कलर डीप ग्रीन है। अब स्टेंसिल के चारों तरफ से मास्किंग टेप लगा लीजिए, फिर इसको वॉल पे चिपक लीजिए।